Hi, I'm Alia Bhatt. Hi, I'm Arjun Kapoor. And you're watching Us on Bollywood Hungama. .com. Keep on watching. ये तुम्हारे राइट गाल के लेफ्ट साइड पे जो ये तिल है उस पे दिल आ गया है मेरा, मुझे रोज फॉलो करता रहता है. आई जस्ट वांट टू किस यू. Well, that's the sort of interesting chemistry that Krish and Ananya are having in the Two States promo, and we have with us the team of Two States. Wonderful to have you guys on Bollywood Hungama. This promo's out. That's there in the theatrical itself. Na? That means I've not seen the theatrical for a while. I've been so busy promoting the film, I've not bothered seeing the theatrical. Right. But ये जो आपको तिल आपको जो मतलब आप follow कर रहे हैं उसको something about that because this is a मैं director और writer की instruction follow कर रहा हूँ बस. Right. This is a very interesting sort of romantic way to say to a girl actually. उसके साथ क्या होता है वो एक्चुअली हम हिंदी में बोलते हैं ना फफलाने लगता है वो जब प्यार में पड़ जाता है उसे खुद समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है उसके साथ. ही इज अ वेरी सॉर्टेड इंडिविजुअल, बहुत वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, वेरी कंट्रोल्ड अबाउट हिज इमोशंस एंड डजंट टॉक टू मच और वेल स्पोकन. Suddenly he spends time with by far the most attractive girl he's ever met in his life and he doesn't understand ये हो क्या रहा है मेरे साथ. Right. So he tries to distance himself but he wants to be close to her. And then he starts dancing in the college and then he's avoiding her but then he wants to meet her. तो जो एक नॉर्मल सा बंदा था वो सडनली आशिक प्रेमी मिजाज का हो जाता है. एंड जब वो कन्फेस करता है ही कांट हैंग आउट विद हर बिकॉज ये एक्चुअली वो कहना चाहता है हम पढ़ाई साथ में नहीं कर सकता है, यू नो वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स और ये वो. और करते 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 एक ट्रैक पे निकलता है बोलते बोलते एक्चुअली तुम्हारा राइट गाल के लेफ्ट साइड पे तिल है उसमें दिल आ गया मेरा, मैं घूरते रहता हूँ जैसे किसी. Right. And then This entire till and everything, this we used to see such sort of romance in the 60s and 70s movies. It's written in the book. Maybe, but I'm talking about the context of the film as well. That this is something which is interesting. You know, that recreating the entire. Basically, whenever they फूलों work के बारे में बात together, करना, whenever right. he looks at her so much that he observes everything, her earring, her till, her hair, her बात कैसे everything. करती सबको. He doesn't want to, but he keeps doing it. So he's trying to not fall in love, but the more he's trying not to, he is noticing everything and falling more and more in love with the girl. I'm sure it's in the book. मैंने किताब पढ़ी नहीं है, but I'm assuming. No, that I mean this is like that's Right. something that I think my character probably finds very cute because he notices all these वो things. कुछ भी बोल देता है उसे. इतना Right. कंट्रोल सा इंसान जो सडनली बहुत. And actually मेरे राइट गाल के लेफ्ट साइड पे तिल है. Right. Very ironically. So 60s और 70s, I think रोमांस तो हमेशा सेम रहा है. Right. मैं अंदाज की बात कर रहा हाँ, हूँ. पर मैंने उस बोला time में, जैसे वो हाँ. थोड़ा अजीब सा है, but I guess Remix style में. हाँ करेक्ट वो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द 60s and 70s. Right. बट अगर आप रोमांस को देखें सिनेमा में, यू ऑलवेज सीन रोमांस हैज ऑलवेज बीन. रोमांस तो रोमांस होता है, भाषा बदलती, बोलने का तरीका बदलता है, लेकिन कुछ चीजें होती है वो हमेशा सेम रहती है. You also have this that ये तुम्हारा first time था. तुम्हारे साथ हाँ. I find it interesting actually. You know, so could you please elaborate on that? That's their first time. Right. That's their first time and for yeah. There's a little, I think in Ananya's case, she obviously knows she's the better looking one than the two. Right. So I think it just comes out in conversation कि this was your first time. Because अच्छा. तुम्हें कहाँ ज़्यादा लड़कियाँ मिलती होगी. Correct. I think it comes more out of that. What else? So, but also she's like this curious buff, you know. She wants to know everything. But in You're a that virgin or not? In that scene, because they don't know each other so well, so you know when she says Right. that, and so he gives a sarcastic. तुम्हारे साथ हाँ, it's वो तो obvious चीज बोलता है, पर he obviously that's his self defense. Being matter of fact. हाँ कि उसका defense है कि हाँ तुम्हारे साथ हाँ. Obviously मेरी भी girlfriend रही है. I might not be as good looking as you. Right. And he says that also. It's a start to a conversation. Right. It leads to a very interesting conversation. Right. In the book, both these guys they are in a live-in relationship as well, and which is interesting as well. That, Yes, you very. know, which is progressive as well. Correct. So looking forward to the judgments and the remarks and. See, all I that. think what is interesting for me personally is that it's not only about the live-in relationship. I Right. think the live-in relationship, there's nothing wrong with it if you want to suss out each other to see आपकी long-term compatibility है, whether you can live together, coexist. एक होता है कि 2 घंटे दिन में बिताना या एक बार मिलना दिन में, एक होता है कि समय बिताना and to realize this is the person you love and you feel you can spend the rest of your life with. तो वो live-in relationship के वजह से वो ये फैसले पे आते हैं कि वो एक साथ रहना चाहते हैं जिंदगी भर, तब जाके शादी का फैसला करते हैं. जब फैमिलीज नहीं मानती दे परसिस्ट. ऐसा नहीं है कि दे गेट अपसेट विद द फैमिलीज, दे स्टिल डिसाइड टू डू द राइट थिंग इज टू टेक देयर ब्लेसिंग्स. सो आई थिंक इट्स अ नाइस डायनामिक बिटवीन व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन आवर कंट्री टुडे. वी आर अ फॉरवर्ड मूविंग कंट्री बट हम रीति रिवाज को बहुत मायने देते हैं, इवन दो वी आर द यूथ एंड वी हैव अ माइंड ऑफ आवर ओन. और हम जानते हैं हम सही है या हम मानते हैं हम सही है, पर ये कभी नहीं होगा दैट विल बी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स सर्टेन रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस इन आवर कंट्री, व्हिच आई थिंक Two States showcases really nicely. Right.